गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सर्कुलर वेवगाइड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द मोड्स डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं अपन टीई मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। जिस तरह से हमने रेक्टेंगुलर वेवगाइड मोड में देखा कि टीई मोड के लिए, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक मोड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्रांसवर्स होता है, न कि along the direction of propagation. So along the z direction Ez equal to 0, but Hz is not equal to 0. So Hz is the responsible component to transmit the electromagnetic energy in the waveguide for this TE mode. And the wave equation for this one Hz is, as per we know that it is also known the Helmholtz equations, and that's del square Hz equal to gamma square Hz. And its possible solution is Hz equal to H0z Jn, that is function of the KCR, cos function of the n phi, and e raised to power minus j beta z. For a lossless dielectric media, we know very well that the Maxwell equations are given as del cross equal to minus j omega mu h and del cross h equal to j omega epsilon e. Mu is the permeability of the medium and the epsilon is the permittivity of the medium. Omega is the angular frequency. So to write in the components form, we can expand this del cross E into the determinants form. Del cross E equal to the AR vector by the R A phi cap and the AZ cap by the R, and del by del R, del by del phi, del by del Z, ERR E phi Z. Remember, this one is not equal to that I cap, J cap and K cap. This is the different from that, because this is in the cylindrical coordinate system, and in form of the H we can write ER HR, A phi H phi and the AZ HZ. AR, A phi and AZ are the unit vectors. Now we can write the R component of it, that is 1 by R del Ez by del phi minus del E phi by del Z equal to minus j omega mu HR. For the second, del ER by del Z minus del Ez by del R equal to minus j omega mu H phi, and last 1 by R del by del R E phi minus 1 by R del ER by del phi equal to minus j omega mu HZ. These are the three components obtained for the HR, H phi and HZ. Similarly, to obtain the E components, we also use the second equation del cross H, that is equal to AR vector by the R, A phi vector unit vector and the AZ unit vector by the R, del by del R, del by del phi, del by del Z, and HR, R, H phi and HZ, and that is equal to j omega epsilon AR, ER, A phi, E phi, AZ cap, AZ. Now to obtain the first, second, third components for the R theta, R phi Z, for first 1 by R del Hz by del phi minus del by del Z, H phi equal to j omega epsilon ER. For the second, del HR del Z minus del Hz by del phi R equal to j omega epsilon E phi, and the last 1 by R del by del R H phi minus 1 by R del HR by del phi j omega epsilon EZ. And to obtain del by del Z, we know very well that the dependence of the Z components is del by del Z equal to minus j beta, and for the TE mod Ez equal to 0. So using these two conditions in equation 4th A 4th B and the 5th A 5th B, we obtain j beta E phi equal to minus j omega mu HR equal to, that provides the HR equal to minus beta omega epsilon omega mu E phi, and for the sport B we can obtain the H phi equal to beta by omega mu ER, and then last for the 5th A we can obtain 1 by R del Hz by del phi plus j beta H phi equal to j omega epsilon ER, and to substitute the value of the H phi from the 7B in this one, that is the beta by omega mu ER,
and that equations give, on rearranging the ER on the one sides, we obtain the ER equal to minus j omega mu by the kc square multiplied by 1 by r del hz by del phi, where omega square mu epsilon minus beta square equal to kc square, and kc is known as the cutoff wave number. This is very important equations, that all equations to be calculated in form of the hz, because in the TE mode hz is not equal to 0. For the similarly, fifth B, we can write minus j beta hr minus del hz by del r equal to j omega epsilon e phi. Substituting in this equation with the 7a, we obtain value of the hr minus j beta minus beta omega mu e phi minus del hz by del r equal to j omega epsilon e phi. Rearranging the e phi and substituting the kc square equal to omega square mu epsilon minus beta square, we finally obtain e phi equal to j omega mu by the kc square del hz by del r. And then using 7c, 7d, 7a, 7b, we obtain hr and h phi. hr equal to minus beta omega mu e phi, and this gives, substituting the value of the e phi, j beta kc square del hz by del r. And similarly h phi minus j beta kc square multiplied by 1 by r del hz by del phi. To remember this one, this is a very important concept, that r does not, if del by del r, then it does not have any r, but if del by del phi, then it have the r. This is the difference between these two. बाकी सब कुछ सही है एच आर एच पाई में. And we have used this hz equal to h0z jn kcr cos n phi e raised to power minus j beta z, जो हमने पहले कैलकुलेट किया. So the possible electric and magnetic components for the TE mode in the circular waveguide as given 7a to the 7g. Using the boundary conditions, we can calculate the different components. Now, what are the boundary conditions? This is very important. This is not like that the rectangular waveguide where x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to b. Here is the circumference of this tube, and that is the x are equal to the a. So we know that phi component of electric field E phi, which is tangent to the inner surface of the circular waveguide, at r equal to 0 must be vanish. E phi equal to 0. Why E phi is 0? See this one. The tangential component on this one is 0. This is only the normal component or vertical component, only this one only present. Because at the metallic surface, only the normal component or the tangential the normal component is only present. ER is non equal to 0, but the tangential component E phi equal to 0. सेम फर्स्ट ईयर में करके आए हैं कि किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस है, उस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द सरफेस और द टेंजेंशियल टू दिस वन, दैट इज 0, इट इज ऑलवेज नॉर्मल. It is not normal, it is not perpendicular to this one, then what happens that it have the components, and due to this component the charge present on the conductor will start automatically without using any external battery. So it is not possible by the nature. So we know that the E phi equal to 0. And for what? For all values of phi equal to 0 to 2 pi. So E phi equal to j omega mu kc square del hz by del r at r equal to a, it is 0. So as like the figure, the phi जो से चारों तरफ घूमता है 0 to 2 pi, तो सब जगह इसकी टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 आएगा. So E phi r equal to a equal to 0 del hz by del r at r equal to a equal to 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए हमें, तो डिफ्रेंशिएट होगा केवल बीच वाला टर्म्स, बिकॉज उसमें jn में था, jn kcr था, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और r की जगह a हो जाएगा. डिफ्रेंशिएट करने से इसको z डैश हो जाता है, z डैश इक्वल टू डी जे बाई डी आर. बाकी सब कुछ वैसे ही कंपोनेंट होगा. दैट डेल एच जेड बाई डेल आर इक्वल दैट एट आर इक्वल टू ए एच जीरो जेड जे एन डैश के सी ए कॉस एन फाई माइनस ई रेस्ट टू माइनस जे बीटा इक्वल टू 0. As per hz0 is not equal to 0, cos n phi is not equal to 0, so the remaining component which depend on the r
and that is J and S KCA equal to 0. Since it is in the oscillatory functions, जिस तरह से अपने बनाया था कि J n एक oscillatory function होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, so the J and S KCA are also oscillatory functions. The equation 8, जो above equations have the infinite number of the solutions, क्योंकि वो ऊपर नीचे कहीं पे भी आएगी, टकराएगी, इसमें जीरो हो जाएगी, and hence it have the infinite number of the modes present in the circular waveguide. इस तरह से कई सारे मोड इसके अंदर हो सकते हैं सर्कुलर वेवगाइड में, क्योंकि इस तरह से जो ऑसिलेटरी इक्वेशन है उसमें कई सारी संख्याएं हो सकती है. लेट mth root of the above equation 8 is denoted by this one, that is the Pnm dash mth root है, which are given values of the above equations given by Pnm dash equal to Kca. जो बीच की चीज़ है उसका ये कोई रूट है तो उसको हमने Pnm dash का नाम दे दिया है, और ये किसके बराबर आएगा, दैट इज द m इज रूट ऑफ द इक्वेशन a एंड दिस इज and the Kc equal to Pnm dash by the a, where here the n equal to 0, 1, 2, 3 represent the number of full cycles of the field variations in the one angular revolution through the 360 degree. मीन्स n की वैल्यू खूब सारी हो सकती है और ये कई संख्याएं हो सकती है, 0 से लेके 5 की वैल्यू 360 डिग्री तक, तथा m equal to 1, 2, 3 represents the number of zeros of the J and S KCA along the radius excluding the zeros in the axis, कि उसके अंदर और भी कई सारे जीरोज आएंगे, उन संख्या जो संख्या है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो m पे डिपेंड करेगा. सो वी कैन सी द Kc इक्वल टू Pnm डैश बाय द a, और Pnm डैश की वैल्यूज इस टेबल के अकॉर्डिंग द वैल्यूज फॉर द TENM सर्कुलर मोड्स जो आती है n और m के लिए 1, 2, 3 के हैं, और m की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है. So using this one we can calculate the propagation constant beta equal to root of the omega square mu epsilon minus Kc square, and here the Kc equal to Pnm dash by the a. कट ऑफ वेव नंबर चाहिए, सेम चीज़, कट ऑफ के लिए वेव नंबर फॉर द विच द मोड प्रोपगेशन कांस्टेंट वेनिसेस बीटा इक्वल टू 0, सो द ओमेगा c square mu epsilon root of this one and minus Pnm dash by the a whole square, and this provides that Pnm dash by the a equal to omega c root of the mu epsilon, and the Kc which is equal to Pnm dash by the a equal to omega c mu root of the mu epsilon. कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए हमें fc, तो कैसे निकालेंगे, ओमेगा c को हम 2 पाई fc लिख सकते हैं, सो दैट इज गिव्स fc इक्वल टू Pnm dash 2 पाई a mu epsilon. For the air field waveguides mu r and epsilon are equal to 1, so 1 by mu epsilon root of this one is equal to the c. C is the velocity of light, or c is the velocity of the wave, electromagnetic wave inside this waveguide. So fc equal to the c Pnm 2 pi a. कट ऑफ वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ लिखते हैं अपन c by fc, तो c by fc इक्वल टू 2 pi a Pnm डैश लिख सकते हैं. इसी तरह से फेस वेलोसिटी चाहिए, सारे कंपोनेंट्स इस तरह से निकाल सकते हैं अपन, जैसे हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स में निकाल लेते हैं वो इसमें आ सकता है. फेस वेलोसिटी Vp इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा, ओमेगा बीटा की जगह हम रूट ऑफ द ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस Pnm डैश बाय द a के स्क्वायर. सो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा म्यू एप्सिलॉन दिस इज 1 माइनस Pnm डैश बाय द a स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, एंड दिस गिव्स 1 बाय रूट ऑफ द mu epsilon divided by root of the 1 minus fc by the f का whole square. This give that the phase velocity is Vp. कट गाइड वेवलेंथ चाहिए तो lambda g equal to Vp by f कर सकते हैं. Again that is the same conditions, lambda 0 divided by root of the 1 minus fc by the f के square. वेव इम्पिडेंस चाहिए कि कितना इसका वेवगाइड का इम्पिडेंस होता है, जेड जी इक्वल टू ओमेगा म्यू बाय द बी जी होता है, और बी जी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें. सो दिस इज द रूट ऑफ द म्यू बाय द एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ द 1 माइनस एफ सी बाय द एफ के स्क्वायर, एंड जेड जी इक्वल टू कितना होता है, हमने पहले क्या रूट किया था, ई आर बाय द एच फाइव इक्वल टू माइनस ई फाइव बाई एच आर, दैट इज इक्वल टू ओमेगा म्यू बाय द बी जी. सो दिस इज द components related with the TE mode and the different electric field, magnetic field which are propagating through this waveguide mode for the TE mode. So this is sufficient for today. Thanks.